Hey everyone, welcome back to our channel. As you know that we are nearing to term 2 exams and all of you are getting very anxious. Side by side you are working really hard, which is commendable. We can see that how you're commenting on videos, how hard you're working with each and every question. So here we are in our attempt to make life easier for you. I'm showing you the solve sample paper for class 10th English with the marking scheme as well, that how you're supposed to answer and what will you write which will fetch you marks. So let's see. So आपका जो literature है उसमें आपके पास ये आपको एक second part में question है which is basically long questions and you just have to do two out of the given options. So the thing that I want to reiterate again and again is that you don't have to do all the questions. आप सिर्फ वही question करिए जो आपको आते हैं और अच्छे से options read करिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 question लिखे हैं आप तीनों करने बैठ गए but उन्होंने बोला आपको 2 ही करने को था. Please don't do that because that doesn't help. That will only lead to wastage of time, which we don't want to do in any of our boards, not just of English but of all the subjects. So starting with the first question, it's a 4 marker that I have to attempt in 120 words. So parents play a crucial role in the upbringing of their children. Critically examine the parents of Bholi and Ebright, highlighting their impact on their children's life. तो ये दोनों बच्चों की स्टोरी थी एंड दोनों बच्चों की स्टोरी बिल्कुल ऑपोजिट जा रही है. जब भी ऑपोजिट आएगा कुछ भी, so you have to spend some time in doing compare and contrast. ठीक है, आपको वो टाइम निकालना है एंड यू हैव टू डू दिस. अब यार भोली के पेरेंट्स जो थे आपको वो बताना है, ई ब्राइट के पेरेंट्स का जो रोल था यू हैव टू टेल दैट एग्जैक्टली. तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि पेरेंट्स का रोल क्या होता है वो आपको बताना है. तो आप ये लिख सकते हैं क्रूशियल एंड इनडेलेबल. इनडेलेबल मतलब जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते. रोल प्लेड बाय पेरेंट्स. यू हैव टू गिव अ गुड लाइन. पेरेंट्स इन्फ्लुएंस देयर चिल्ड्रन बोथ इम्प्लिसिटली एंड एक्सप्लिसिटली. हर तरीके से उनका इन्फ्लुएंस है. या आप सीखिए implicit, explicit, amazing words to use and to make your paras amazing and beautiful. उसके बाद अब आगे और क्या लिख सकते हैं, आपको इनमें से कोई भी 3 पॉइंट लिखने हैं, एनी 3 or 4. सो आपको बताना है, कंपेयर करना है बेसिकली कि रिचर्ड ई ब्राइट की जो मदर थी वो लविंग थी, केयरिंग थी, अंडरस्टैंडिंग थी. आई वुड ऑल्सो से कि उसकी मॉम जो थी शी वॉज फार साइटेड. वो चाहती थी कि जो उसका बच्चा है वो आगे बढ़ के कुछ करे. अगर उसको अभी सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, शी न्यू दैट लेटर दिस विल रीप बेनिफिट्स. और उसने वैक्यूम उसकी लाइफ में जो भी था वो फिल किया उसके फादर ना होने का. उसने अपना टाइम, एनर्जी, सिर्फ ये नहीं किया कि आई एम अर्निंग फॉर यू, आई एम अ वेल्दी मदर सो यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू. ऐसा नहीं. शी इन्वेस्टेड हर टाइम, एनर्जी, शी वॉज ऑलवेज देयर. ठीक है. ऑन दी अदर हैंड यू विल यूज वर्ड्स लाइक ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी कॉन्ट्रेरी. ये सारे फंक्शनल वर्ड्स होते हैं. अगर आप नहीं यूज करेंगे ऐसे लॉन्ग आंसर्स में, लॉन्ग कॉम्पोजिशन में, तो आपको मार्क्स नहीं मिलते बोर्ड में. सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. अब जो बोली के पेरेंट्स हैं उनके लिए क्या एडजेक्टिव, अनकेयरिंग, इनडिफरेंट, दे डिडंट केयर अबाउट हर, दे वर बायस्ड, दे वर इनसेंसिटिव, दे वर पेट्रियार्कल, दे हैड अ पेट्रियार्कल माइंडसेट. मतलब वो मेल्स को प्रेफरेंस देते थे ओवर फीमेल. ठीक है. उनका जो आउटलुक था वो ट्रेडिशनल था. वो फार साइटेड नहीं थे ऑब्वियसली. दे डिडंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेटिंग अ गर्ल, इन्वेस्टिंग टाइम इन हर. ठीक है. They didn't even want to groom her because उनके लिए she was a total waste of time, because they were not able to understand that even she can reap value, or even she, she'll have a future. They wanted to shut her down completely. And despite their prosperity, they were rich. ठीक है. फिर भी वो उसको इसके हाल पे छोड़ा था उसको. They were going to marry her to someone who was not a good suitor for her. So all these things. Then concluding thought you have to write. So आपको ये 4 marker अपना कैसे बनाना है, I'll revise it one more time. First you have to give a good opening line, introduction line. It should be beautiful, very comprehensive. Then you have to analyze certain points, 3 or 4 points आप ले लो main वाले, and start analyzing them, start talking about them, make a paragraph around them, and then you have to give me a conclusion if you want to get full marks in a long composition. These 3 things are very important. You can't do without them. Okay. तो आप लास्ट में सकते हो कि कंट्रीब्यूशन एंड कंपेनियनशिप ऑफ पेरेंट्स कैन नॉट बी डिनाइड, कि वो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते. लव, केयर, गाइडेंस, ऑल ऑफ दिस मेक्स अ डिफरेंट एंड इट मेक्स अ डिफरेंट चाइल्ड ऑल टुगेदर. Coming to next question, this question is from the glimpse of India. उसका जो आपका असम वाला पार्ट है वहां से है. Pranjal and Rajveer discuss their next vacation destination. They shortlist Coorg and Goa. Rajveer is keen on Coorg, tries to convince Pranjal. Develop a conversation between the two based on your understanding of glimpse of India. So अभी जो ये चीज है ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है. This is more like a value based question.
इसमें चैप्टर में से नहीं है, सो यू हैव टू मेक अ डायलॉग. सो आप ये तभी करें व्हेन यू हैव अ क्रिएटिव माइंडसेट, अदरवाइज आई वुड टेल यू कि आप इसको थोड़ा सा यू कैन इग्नोर दिस क्वेश्चन. ठीक है, 4 मार्क में यू कैन गो टू द नेक्स्ट वन, बट इफ यू यू थिंक यू कैन मेक अ गुड डायलॉग आउट ऑफ इट, देन प्लीज डेफिनेटली. तो इसमें आपको बेसिकली ये बताना है कि राजवीर कूर की क्या क्या तारीफ करेगा, और आपको क्या पता है, व्हाट डू यू नो अबाउट कूर. यू आल्सो हैव रेड अ चैप्टर, है ना, ग्लिम्स ऑफ इंडिया में आपने एक चैप्टर पढ़ा है, तो उसमें से यू विल एक्सट्रैक्ट पॉइंट्स, you will take points from that particular chapter and you will start enlisting them one by one in a creative manner. ठीक है, तो आप ये लिखोगे, being an explorer must be able to give an interesting account about who to convince Pranjal. The persuasive element using examples from text. आपको examples text में से use करने हैं. You have to say that that place is culturally rich, वहाँ पे brave लोग हैं, hospitality is great. brave अगर आप लोग नहीं भी लिखते तो भी चलेगा. ठीक है, और you can talk about that you want to see the rainforest there, the fauna there, you want to go and do all sorts of activities, for example water activity, water sports, hiking, watch birds, all of that. And look at some sceneries also. Coming to the next question, farce the kind of comedy which includes situations and dialogues that are ridiculous, exaggerated and even absurd. Evaluate the play proposal as a farce. So farce एक वो चीज होती है जो एकदम बढ़ा चढ़ा के आपने क्या किया, कॉमेडी करी हुई है, बढ़ा चढ़ा के आपने absurd चीजें करी हैं जो होना असली में होना बहुत मुश्किल है. तो प्रपोजल में भी ऐसे ही होता है कि कोई आता है एंड देन बोथ ऑफ देम आर सो डेस्परेट दैट इवन आफ्टर फाइटिंग दे आर ओके विद द प्रपोजल. सो इसलिए वो एक फार्स है. सो वी हैव टू टॉक अबाउट दैट. इंट्रोडक्शन में आप मुझे बताएंगे कि फार्शियल कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, उसमें जो ऐसे कैरेक्टर्स जो रिडिकुलस हैं, बहुत ही एग्जैजरेटेड हैं. तो हमारे सारे ही कैरेक्टर बहुत ही हवा में हैं. तीनों कैरेक्टर्स, द फादर, द नेबर दैट केम एंड द डॉटर जिसके लिए रिश्ता है, all three of them were really over the top. Then you have to evaluate them. You have to evaluate humor in the play कि कैसे कैसे funny elements हैं, कि बहुत ही over the top elements हैं कि आपको हंसी आती है. Improbable situations मतलब impossible situations हैं, making a mountain out of a molehill, this is exaggeration. फिर you can talk about वहाँ पे arguments कैसी हुई हैं, second thought कैसा है. फिर यू कैन टॉक अबाउट कि लमोव का जो नर्व प्रॉब्लम है वो कैसा है, चबकोफ थिएट्रिकल स्टेटमेंट्स जो देता है, नटालिया इज इम्पल्सिव, शी शी टेक्स इम्पल्सिव डिसीजंस. तो ये सब आपको यू हैव टू टेल अस. And then later you have to conclude, obviously. Don't even if I'm not telling you, but don't finish your answers, finish your long answers without a conclusion. Conclusion is mandatory in all your boards, so it really helps you whether you are in class 10th or you're in class 12th, because that is when the moment they'll see that you have tried to wrap the answer, they'll give you full marks. Thank you very much, and you can watch all the other videos, other parts as well. They're already up. This is the last part for this particular paper. Post that we will start with other subjects. Thank you very much. Keep watching.